Good evening, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. I, Bhumika Shah, would like to welcome you all on behalf of Connecting Professionals. I would like to introduce our panel members of today's webinar. We have with us Shri K.M. Agarwalji, our past president of ICI, as guest of honor. We have Shri Manav Mehra our speaker for today's webinar, Shri Sunil Pathak senior member of ICAI, our founder member, Shri Santosh Ramunat and our moderator, Shri Vikram Sharma ji. Today, we are presenting the opportunities for professionals in startup during COVID and post-COVID by our eminent speaker, Shri Manav Mehra ji. If you have any questions during the session, you may type them into the question box. Me and Vikramji will take up during the session. And we will also have time for those questions at the end of the session. Now, I would request Mr. Santosh Ramanujji to give a brief about connecting professional and to take the session ahead. थैंक यू सो मच भूमिका जी। एंड सबसे पहले मैं तहे दिल से सर को धन्यवाद करूंगा कि एम अग्रवाल सर हमारे आज प्लेटफॉर्म पे आए हैं और फर्स्ट टाइम है कनेक्टिंग प्रोफेशनल की हिस्ट्री में कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं अग्रवाल सर आ रहे हैं। तो आज कनेक्टिंग प्रोफेशनल जो छोटी फैमिली से धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कंप्लीट होता जा रहा है आप लोग के प्रेजेंस से और आप लोग की गाइडेंस से। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कनेक्टिंग प्रोफेशनल के 400 मेंबर्स तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है, काफी एक्साइटेड भी हैं आपके प्रेजेंस को देखते हुए। तो थैंक यू सर। तो I would like to thank you, welcome to Sunil Pathak ji, Manav Mehra, also as a co-speaker for the startup. So कनेक्टिंग प्रोफेशनल के सर मैं बताऊंगा इसके, ये एक हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है कुछ दोस्तों से मिलकर। एक्चुअली हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी। तो लास्ट ईयर एक थॉट आया कि एक फाउंडेशन हम लोग एक हेल्पिंग हैंड प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें प्रोफेशनल्स की मदद की जाए। तो जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं वो हमारे लिमिटेड नहीं है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट। देन वी हैव फॉर्म्ड वन कनेक्टिंग प्रोफेशनल फाउंडेशन फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट लॉयर, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, सीपीए, एसीसीए, सीएफए, एमबीए, फिनांस, सब लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। और जुलाई 29 में ये फॉर्म हुआ था ट्रस्ट। 20-25 लोग थे जिसमें सबका गाइडेंस रहा है, सबका सपोर्ट रहा है, जिसमें ऋषभ शाह, नीलेश जैन, रोहित जैन, अरुण सिंह, सोनाली, भूमिका जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग को साथ में लेके आए हैं। और आज हमारी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है, 400 मेंबर्स हैं हम लोग। अपनी प्रेजेंस सर दिल्ली एनसीआर में तो है ही, साथ में बैंगलोर में है, पुणे में है मेंबर्स अपने, कोलकाता में है, चंडीगढ़, रांची, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, ऑल ओवर सारी मेट्रो सिटीज में है। इवन नीदरलैंड से भी कुछ मेंबर्स ज्वाइन किए हैं। तो आने वाले टाइम में देखेंगे हम लोग सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सारे मेंबर्स एक दूसरे को कनेक्ट करें ताकि जो भी हेल्प हो पाए प्रोफेशनल्स को इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग असाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर शेयरिंग, ऑफिस शेयरिंग, जॉब अपॉर्चुनिटी शेयरिंग, उस तरीके से हेल्प कर पाए। तो ये कंसेप्ट को लेते हुए से हम लोग कनेक्टिंग प्रोफेशनल आगे बढ़ रहा है और आप लोग का गाइडेंस मिलता रहेगा। साथ में अग्रवाल सर, आप जैसे लोग आते रहेंगे तो गाइडेंस मिलता रहेगा। और पेंडेमिक में भी सर कनेक्टिंग प्रोफेशनल्स के मेंबर ने काफ़ी एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। इस पेंडेमिक में काफ़ी ज़रूरत थी एक दूसरे को सपोर्ट करने की। तो पेंडेमिक में हम लोगों ने कुछ मेंबर्स मिलके हेल्पिंग हैंड्स कैंपेन रन किए थे। 15 जून से ये कैंपेन रन हो रहा था, जिसमें कि जो भी सीए मेंबर्स हैं या सीएस मेंबर, सीएमए मेंबर्स या स्टूडेंट्स स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, प्रैक्टिस में स्टक हो गए हैं, या कोई अलग तरीके का डिप्रेशन है, तो उन सब के लिए हम लोग मतलब वी यूज टू डू काउंसलिंग इन द मॉर्निंग। तो 10 लोग हैं जो पैनलिस्ट जो अपने ग्रुप से ही हैं कनेक्टिंग प्रोफेशनल से, वो हम लोग काउंसलिंग किया करते हैं। अभी तक हम लोग 620 कॉल रिसीव हो चुका है ऑल ओवर इंडिया और 100 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने पेंडेमिक में जॉब दिलाया है। तो ये कनेक्टिंग प्रोफेशनल के टीम का सपोर्ट है जो इतने लोगों को बेनिफिट पास ऑन हो रहा है।
तो इट्स ऑल अबाउट द कनेक्टिंग प्रोफेशनल जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। आज हमारे चीफ गेस्ट के.एम. अग्रवाल सर हैं, जिसके बारे में मैं चाहूंगा आप सबको बताना कि अग्रवाल सर हमारे पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीआई में। 91-92 सर का सेशन था और सर 69 के पास आउट हैं। 1969 में इन्होंने सीए क्लियर किया था और तब से इनकी फॉर्म चल रही है। Agrawal sir is a past president of ICI during 1991, past president of South Asian Federation of Accountants in 90s, past member of executive committee of the Confederation of Asian Pacific Accountant in 1990. Okay, he's the past president, past vice president in the Institute of our in ICI in 89-90. Past chairman in NIRC during 1984-85. Is the co-author of Ready Reference for Income Tax Law and Circulars. He has done BCom from Allahabad University in 1966. Was awarded Chancellor Medal for being the best student of Commerce Department of the university. सर काफी एनजीओ से भी जुड़े हैं. He is associated with the various professional and social organization. Rotary Club of Delhi, Midtown, Chhatrapati Shivaji Maharaj National Committee, doing education and social work at all over India level. Rotary Diagnostic Center से भी जुड़े हैं. वैसे प्रेसिडेंट सर की ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं. ही इज द एट द टॉप ऑफ आवर मतलब जो इंस्टीट्यूट के जो टॉप पोजीशन है वो होल्ड कर रहे हैं और 69 में सीए बने हैं. मैं लगता है सीपी के बहुत सारे मेंबर्स मेरे को लगता है बॉर्न ईयर से भी पहले हैं. तो मैं सर से गुजारिश करूंगा सर आप अपना टाइम आप दिया है, आप कनेक्टिंग प्रोफेशनल बच्चों को गाइडेंस दें. आपके सामने हम लोग बच्चे ही हैं, गाइड करें कैसे हम लोग लाइफ में और अच्छा काम कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेशनली क्या ग्रैब कर सकते हैं. और खासकर मैं चाहूंगा कि सर आपने अपनी लाइफ की जर्नी बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया, हमारी एज में कैसे आप काम करते थे, क्या अपॉर्चुनिटी देखते थे, किस तरीके से आपने एनआईआरसी में आपने वहां तक का सफर रहा, प्रेसिडेंट तक का सफर रहा, लाइफ का क्या स्ट्रगल पॉइंट रहा सर. तो मैं उन सब चीज़ों को सुनना चाहूँगा सर कि आप किस तरीके से हम लोग को गाइड कर सकते हैं. ओवर टू यू के.एम. अग्रवाल सर. थैंक यू. Thank you, Santoshi, for very nice words. You have spoken, you have been extra generous to me. My dear Sri Sunil Pathakji, a very nice book you have written on startup. Mr. Manav Mehra ji, Mr. Vikram Sharma ji, and Bhumika Shah, and other dignitaries who are hearing and participating, and my dear professional colleagues, friends, and all the audience. It is indeed my great privilege and pleasure to be here this afternoon, and I feel it to be great proud. Friends, I am very happy to know that this foundation, Connecting Professionals, is doing wonderful work for those who are starting in their practice. They are not only chartered accountants, but they are company secretaries and from other professionals also. It is indeed a very laudable job, work they are doing. Am I laudable? Yes sir, audible sir. Now, the topic for today is opportunities for professionals before COVID, after COVID, during COVID and after COVID. I would not like to dwell much upon that. Mr. Manav Mehra is here. He will be dealing with the subject in great detail. As ordered to me by Mr. Santosh ji, that I should say something about my journey of 51 years in the profession and something prior to that, how I started. Friends, I came from a very middle class family, from a very small place called Rampur, UP. And how it started, उसके बारे में मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहूँगा. नज़र को वो दिखता, नज़र को वो ही पसंद आता है जो अच्छा लगता है, जो नसीब में नहीं होता. नज़र को वो अच्छा लगता है जो नसीब में नहीं होता, वो नहीं दिखता जो नसीब में होता है. This one is like that. मुझे कभी वो नहीं दिखा जो मेरे नसीब में था.
और मैं खुलेआम कहता हूँ कि मुझे सब कुछ समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा मिला है, जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था। शायद कुछ एफर्ट्स किए हों या ना किए हों, वो भी मुझे याद नहीं। When I was studying in class 10th in Rampur, UP, in a government college, government school, I was very naughty boy, but was interested in kind of elections like class representative association, this. One of my teachers said, and I was always number one in the class also, so far as studies are concerned. One of my teacher at that time told me, Mr. Such and such, you should do chartered accountancy, CA. I didn't know what the CA is at that time. And you will get a salary of 400 rupees a month. If you qualify and do CA, you will get a salary of 400 rupees a month. So delighted to hear that. Some other teachers told me that you should join Allahabad University or Lucknow University and contest election there. And you will become entitled to contest for some post in the political party. Another fantastic idea. But my parents very scared, very naughty. What he will do, be doing in the university alone. I promised that I'll not contest any election. I'll do my best. They sent me to Allahabad University. Coming from a very middle class family, Hindi medium, opted for English medium there. Very difficult. Anyway, first year, when I came home after my examination, I told my father, our second year final, I told my father that I am failing in the examinations, I have not done well. He said, all right, there is not always success in your life, in any life. Repeat again, if it is so. One day evening, a friend of mine from Allahabad called me and he said, Mr. Agarwal, you have qualified with flying colors in first division. Very happy, turning point in life. Was awarded Best Student Medal of the Commerce Department by Lal Bahadur Shastri Ji, Prime Minister at that time. Very happy moment. That was a turning point for me in my life. Came to Delhi all alone. There was no seats available with chartered accountants to join chartered accountancy. It was a premium system at that time. You have to deposit certain premium, then you will get a seat for articleship. And the article period was 4 years. If articleship is not available, then you will join an audit seat which was for 5 years. God willing with me, be happy with me. A regulation came that if you have qualified BCom in first division with more than 60% marks, you would be, your employer would be entitled for additional seat for you as an article clerk, and you would be doing chartered accountancy in 3 years provided you do your intermediate examination in first attempt. God again with me. Got the seat of articleship immediately, not waiting for months. Got intermediate cleared in first attempt, so the period of articles reduced from 4 years to 3 years. Got final both the attempts in first time, and while doing some accounting job or audit job of one of my clients in my office, there was some misunderstanding, and misunderstanding for good. The misunderstanding was that I was looking into his accounts, there were certain mistakes. He said, Mr. Agarwal, can you help me in rewriting all those things and getting it properly done? It was very small account. I said, yes. The journey started, second journey started from that. My articles were going to finish. I was living in a small room, paying 50 rupees as a rent in Shakti Nagar. My training was being complete. My articles were being completed sometime on 31st July. He sent me some tempo and his car to load my luggage and give me a flat in Daryaganj. It is how it started. And then I didn't look back. God was always with me. In 1970, the firm where I did my training, Mr. S.V. Gupta, he expired. He was a distant relative of mine.
After thinking a lot about all these things, and I came to know that many people are approaching him to buy that firm, and his father was alive at that time. Having a lot of courage, I went to him and said, he was my distant relative, Nanaji, I am here with very heavy heart. I was not coming, but when I looked into the circumstances, I thought it is my duty and my job to be with you at that time. I understand you are selling this firm and there are many buyers. Kindly treat me as one of the buyers of your firm. He said, okay, I have got this offer, this offer, this offer. I said, I am not bargaining, I am not telling you anything. Whatever you get, including everything, premises, telephone, practice, everything, I'll pay you 5,000 rupees extra and we'll buy out the whole thing in one lot. That client who provided me the room, his flat in Daryaganj, he financed me for that firm. Mr. Rameshwar Thakur was present at that time to sign that takeover agreement with the family. I am so grateful to him also. So things started like that. Got a lot of job. Because what I thought, that you have to give more than others to your profession. Then only you are successful. You have to love what you are doing. It is not just, साहब मैं कर रहा हूँ बस ठीक है. No. Whatever you're doing, you love, you work hard. How I started, I read the newspaper, look into the various opportunities, professional opportunities of book writing, auditing. This sometimes they used to come press, go there, contact them. And one more important thing, when I qualified, I didn't qualify. In fact, I was waiting for my result. I went to Jain and Company in Nai Sadak to buy some legal book. And he said, बेटा क्या करते हो तुम? मैंने कहा सर मैं सीए कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट अब 1 तारीख को आने वाला है, 1 अगस्त को, और इसलिए मैं किताब लेने आया हूँ जिससे कुछ पढूं. बोले मैं तुम्हें एक केस दूंगा तो तुम उसको अच्छी तरह से करोगे ना? मैंने कहा हाँ मैं करूंगा. बोले ये नई सड़क पे एक पब्लिशर हैं, इनके पास चले जाओ, उनको एक सर्टिफिकेट इशू करना है. मैंने कहा वो तो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं है मेरा. बोले नहीं आप जाओ उनसे मिलो. मैंने कहा ठीक है. तो मैं उनके पास गया. उन्होंने कहा भाई हमारा एक कोर्ट केस चल रहा है रॉयल्टी का, जिसमें हमें बुक्स का सर्टिफिकेशन देना है कि हमने कितनी बुक्स सेल करी हैं. तो हमने कहा साहब हम अभी तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि हम 1-2 तारीख में आपको सर्टिफिकेट दे पाएंगे क्योंकि हम पास हो जाएंगे. तो हमें 2-3 दिन लगेंगे. तो बोले आपको 2-3 दिन इसको चेक करने में लगेंगे, तो आप इसको चेक करिए और 1-2 तारीख में सर्टिफिकेट दे दीजिए. मैंने कहा ठीक है. हमने उसको 2-3 दिन में खूब चेक करा कि भाई कोर्ट भी नहीं का केस है. तो हमसे हमारा तय हुआ कि वो हमें 50 रुपये उसकी फीस देंगे. मैंने कहा बहुत खुश हुए. तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो हमें याद है कि हमने उसका पे ऑर्डर पहले ही दिन बनवा के रख लिया था फीस का, और उनसे कह दिया था कि जी हमारी कंपनी का ये नाम होगा और इस तरह से होगा और ये हमारा लेटर हेड होगा. तो उन पब्लिशर थे, उन्होंने हमारी स्टैम्प बनवा दी 1 तारीख को, उन्होंने हमारा लेटर हेड भी छपवा दिया. हम 1 तारीख से सिंस फर्स्ट डे ऑफ माय प्रोफेशन आई एम इन प्रैक्टिस, और वो मैंने उनको सर्टिफिकेट 2 तारीख को इशू कर दिया. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. वेरी नाइस जर्नी whatever I have done. In 1981-82, we were 3 firms of chartered accountants in the same building. Sumer Bansal and Company, K.M. Agarwal and Company, myself, and Hingorani and Company. Hingorani was member of the regional council at that time. He came to Mr. Sumer Bansal, I would like to contest for central council. Then Mr. Sumer Bansal said, Mr. K.M. Agarwal, along with you will contest for the regional council. They both came to my office. I said, I don't know much anything about this. How I can contest? No, you will contest. I contested, did my best, and got elected. God willing, got chairmanship in the very first attempt in the last year. And at that time, tax audit came. In the year 1984-85, tax audit came. Probably it was in the history of the institute that a seminar which was participated by more than 500
Chartered Accountants was organized by me under my leadership at Taj Hotel on tax audit, which was inaugurated again by Mr. Rameshwar Thakur, at that time member Rajya Sabha. Then Mr. Bansal said me, now I should contest for Central Council. Not billing much. Again contested. I was on number 5th. During course of counting, I came to number 2. Contested. Got elected. Second time, I again said, no, I'm not billing. My friend Sumer Bansal. Again, no, you have to contest. Contested. Got into it. Then again, he said, you contest now vice presidentship. I said, there are many stalwarts of the profession, having been in the profession for 1 generation, 2 generation, 3 generations. How can I compete with them? No, you contest, otherwise you will regret that you have not contested for vice presidentship. I contested and got elected as vice president in the first attempt. Got position. So that is why I said, नजर को वही अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो नसीब में नहीं होता, और जो नसीब में होता है वो नजर को नहीं दिखता. That is what I say. And thereafter I am continuing. And of course, Mr. Bharan Sharma. Bharan Sharma is a good friend of our family friend. He has been mentor for my son, who is doing some work and who has been doing in the startups. And he knows that he started a startup around 10 years back with a capital of 1 lakh rupees only with few friends. And now that startup, there it is. He knows it. It has more than 100 MBAs and engineers who are doing research, and it is all export-oriented organization now. And Mr. Bikran Sharma is auditor for that. These few words, friends, I would like to say as about the profession also, as Mr. Sunil Pathak has mentioned in his book, and he has very rightly mentioned that which I have marked in his book. When wings, tails, and limbs are not used wisely and appropriately, they vanish. Similarly, when the finance, which is the blood of an organization, bears the brunt of our ignorance, it starts ignoring the organization too. He has dwelt upon the finance part. He has shown the importance of the finance in an organization, which is a message for the industry, which is a message for the professional, that how important field you have joined. Again, I would like to congratulate all the professionals who have joined this noble profession of chartered accountancy. Why? A lawyer is always interested in litigation. He earns when there is a litigation. A doctor, he earns when there is a bimari. A chartered accountant earns when the country flourishes, the country's economy flourishes, and he is the one who gets up in the morning and prays for the wellness, for the well health of his client, so that he himself is also well. I am very proud of it, that I have joined a profession which always thinks of the country and helps in national building. With these few friends, I think I should close now and wish the organization a very good career, and I feel the future belongs to those who prepare for it today. I thank the organization for inviting me and allowing me to say a few words about me in this profession. Now, thank you very much. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपका और काफ़ी अच्छा लगा. मैं तो एक टाइम में पूरे 80s और 90s के बीच बड़ा अच्छा ट्रैवल हुआ. तो ये जर्नी अब क्या है कि आपने आज सुनाया और बहुत लोगों को बहुत एंड तक ये ध्यान रहेगा. तभी हमने ये स्टार्ट किया कि एटलीस्ट हम लोग जितने सीनियर हैं उनके मोटिवेशनल स्पीच के रूप में हम लोग सुने. तो
Now I request to Bikan, please, सर, एक तो सुनील सर ने एक बुक भी लिखा है, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट टू प्लीज रिवील दैट बुक. Yeah, first 1000 days of startup. It's authored by our Connecting Professional member, Sunil Pathak ji. Thank you. I would like to Thank you so much. congratulate and wish Sunil Pathak ji for a wonderful book he has written, and I am very sure that it will be useful not only for professionals and for others also. Thank you, Sunil ji. Thank you, sir. Thank you so much that you Literature liked to and the it's profession. really blessing. Thank you.